After working with a lot of clients in the high ticket business India में, whether they are a coach or consultant, marketing agencies, service providers, what I have figured out is like there is a proper process कि आप अपना एक high ticket business India में कैसे बना सकते हो, right? Even if you are young, even if you are old, whatever, but how to build that is exactly what we are going to discuss. एक proper process होता है, right? There is a proper mechanism. एंड एक बार अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ जाए देन यू कैन ऑफ कोर्स रेप्लिकेट दिस, बिल्ड योर ओन बिजनेस और इम्प्रूव योर बिजनेस बाय इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक देखा है. So who am I? I'm Shashank. Basically, I have two businesses, a sales agency, and I'm also partnered up with an influencer who is a trading coach, and I'm helping to scale him his business as well, right? तो pretty much दोनों चीज़ें high ticket है. I have like working hands-on experience working with some of the biggest coaches as well in the country, तो I have a good knowledge कि ये कैसे work करता है. So that being said, let's get into the main aspect कि how to build a high ticket business in India. तो I'll start with the perspective कि आपको कुछ भी नहीं आता and I'll give you like a very quick overview कि क्या क्या चीज़ें चाहिए in order to build a business, high ticket business. The very first thing that you would be requiring is going to be first of all clarity. Right? When I say clarity around कि आप सर्विस क्या देने वाले हो, नंबर वन क्या एक्सपर्टीज आप उनको देने वाले हो, व्हाट्स द सर्विस, क्या प्राइसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा क्लैरिटी. अब क्लैरिटी किस किस चीज़ों के अराउंड चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. फर्स्ट वेरी सिंपल थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ इज गोइंग टू बी योर सर्विस. द फर्स्ट थिंग जिसके अराउंड आपको चाहिए क्लैरिटी इज द सर्विस, कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो टू पीपल. प्रीटी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आर यू गोइंग टू बी लाइक रनिंग एड्स फॉर देम, थंबनेल्स बना के दोगे, यूट्यूब वीडियो में हेल्प करोगे, ग्रोइंग देयर इंस्टाग्राम, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नीशेस, यू कैन वॉच सम अदर वीडियो फॉर दैट. बट आई एम एक्सपेक्टिंग इतना तो आपने फिगर आउट किया ही हुआ है, राइट? पहला हो गया सर्विस. सेकंड हो जाएगा आपका प्राइसिंग, कि कितना प्राइस करोगे. इफ़ यू आर चार्जिंग हाई टिकट, तो व्हाट इज़ हाई टिकट फॉर यू, मार्केट में क्या प्राइस कर रहे हैं आपके कंपेटिटर्स, फिगर दैट आउट. Thirdly, what you need is going to be like an offer. Offer is very important. Basically, it's like a, you can say one line जिसके थ्रू आप लोगों को बताओगे कि what you are doing basically, right? To give you a very simple example for of an offer, marketing agencies का offer हो सकता है कि will help you to generate let's say 50 high ticket appointments every single month and with our marketing funnel, and if it doesn't perform you don't pay. That's like one offer, pretty solid, right? तो वैसे करके एक आपको एक वेरी डिफ्रेंशिएटेड ऑफर बनाना होगा एंड यू नीड टू एंश्योर कि आपका जो ऑफर है दैट हैज़ लाइक अ प्रॉपर यूएसपी. व्हाट इज़ यूएसपी? यूएसपी इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट. क्योंकि अगर आप भी एक मार्केटिंग एजेंसी खोल लोगे, इंडिया में लाखों मार्केटिंग एजेंसीज ऑलरेडी है. व्हाट्स डिफरेंट अबाउट यू? मैं आपके पास आके आपको 2 लाख क्यों दूँ व्हेन देयर आर पीपल डूइंग इट फॉर 20,000 रुपीज़, व्हेन देयर आर फ्रीलांसर्स डूइंग इट फॉर 10,000 रुपीज़. व्हाट्स यूनिक इन यू जिसके वजह से आई विल बी गिविंग यू लाइक 2 लाख रुपीज़ का रिटेनर एवरी मंथ. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. यू नीड टू बिल्ड लाइक अ वेरी सॉलिड ऑफर विद अ वेरी सॉलिड यूएसपी, राइट? एंड उसके बेसिस पे ही यू कैन चार्ज हाई टिकट. That is like the first things that you need to have clarity, service, price, offer, USP. Majorly ये मेन चीज़ें होती है what you require. And fourthly एक और जो ज़रूरी चीज़ होती है that is your target audience या फिर your niche. Target audience और niche. क्योंकि अगर आप सबके लिए सब कुछ करना चाहोगे that's like competing with some of the biggest players. अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी और आप सबकी हेल्प करते हो, जिसको हेल्प चाहिए आ जाओ, देन यू आर बेसिकली लाइक डायरेक्टली कंपीटिंग विद वो लोग जो लोग मार्केट में 20 साल 50 साल से बैठे हैं एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो उससे बेटर होगा कि यू सिलेक्ट अ नीच. फॉर एग्जांपल यू कैन बी अ मार्केटिंग एजेंसी ओनली फॉर रियल एस्टेट ओनर्स, फॉर रियल्टर्स लेट्स से, or you can be a marketing agency for let's say only coaches, right? Or you can be a marketing agency for people who want to scale their high ticket businesses. So एक niche पकड़ो ताकि you are able to get into it, and whenever you niche down basically आप ज़्यादा प्राइस भी ले सकते हो for your expertise, right? That is the first thing that you would be requiring, I would say, to build your high ticket business. Second thing जिस पे हम focus करने वाले, I'm going to give you like a very ब्रॉड पर्सपेक्टिव over here, ज़्यादा निटी ग्रिटी एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे, राइट? सेकेंड थिंग यू वुड बी रिक्वायरिंग इज मार्केटिंग.
अब मार्केटिंग में, व्हेन आई से मार्केटिंग, यू नीड लाइक अ प्रॉपर मार्केटिंग funnel. The best funnel for high ticket currently, which is working in India and the world, is something known as a VSL funnel. A VSL funnel का full form होता है a video sales letter funnel. It is pretty simple. आप क्या करते हो इस funnel का, if I had to give you like a complete breakdown, because this is the most important thing. Let's say कि आप ads चला रहे हो, we are supposing कहीं भी ads चला रहे हो, करेक्ट. आपके एड पे लोगों को आपने कुछ अपना ऑफर दिया टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, कुछ डिफरेंट था उसमें. दैट इज़ वाई योर टारगेट ऑडियंस गॉट अट्रैक्टेड, उन्होंने इस एड पे जाके क्लिक किया, करेक्ट. आफ्टर क्लिकिंग द योर एड दे विल गो टू अ लैंडिंग पेज. अब इस लैंडिंग पेज में बेसिकली उनको देना होगा तीन चीज़ें. व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? दिस इज गोइंग टू बी द नेम, देयर ईमेल एंड देयर फ़ोन नंबर. आई एम श्योर आपने भी ये किया होगा ऑन लॉट ऑफ वेबसाइट्स. नहीं किया तो दैट्स प्रीटी सरप्राइजिंग, राइट. तो जैसे ही वो ये तीन चीज़ें दे देंगे, देन यू आर गोइंग टू सेंड देम टू अनदर लैंडिंग पेज विच वुड बी योर VSL पेज. अब ये VSL पेज पे क्या होगा, बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी अ वैल्यू वीडियो जो आपने ऐड में प्रॉमिस किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो. ऑन द एड यू कैन से कि you know, hey realtors of India, if you're looking for 50 high quality appointments every month, I've recorded this free video for you using which you can get this exact result. So if you want to check that out, just click on this ad. तो ad पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गए, लैंडिंग पेज पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ले लिया, ताकि इवन इफ दे डू नॉट बुक अ कॉल, यू हैव एन ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट देम फ्रॉम योर एंड, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर दिया है, राइट. देन दे विल गेट दैट वैल्यू वीडियो जो आपने प्रॉमिस किया था. अब अगर आप B2B स्पेस में हो, दिस वैल्यू वीडियो वुड बी प्रीटी मच शॉर्ट, क्योंकि B2B में पीपल लाइक इट टू द पॉइंट चीज़ हो. तो मैक्सिमम 20 मिनट्स इज गुड इन B2B. एंड अगर आप B2C सर्विसेज बेच रहे हो, देन इट कैन बी लाइक 30 to 40 मिनट्स मैक्स, राइट. तो दैट इज द VSL पेज. अब इस VSL पेज में क्या होगा इज दे विल बी गेटिंग एन ऑप्शन. वीडियो के लेट्स से 5 मिनट के बाद यहाँ पे बटन आ जाएगा टू बुक अ कॉल विद योर टीम, ठीक है. तो दे विल गेट एन ऑप्शन टू बुक अ कॉल, ताकि वो डायरेक्टली आपके क्लोजर से बात कर सके. तो वंस दे क्लिक ऑन दैट, दे वुड बी रीडायरेक्टेड टू लेट्स से कैलेंडली, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल यूज, बट इन जनरल टर्म्स बुकिंग पेज, राइट. बुकिंग पेज में दे विल सिलेक्ट द डेट, द टाइम. उसके बाद दे विल गेट अ प्रॉपर क्वेश्चनर, let's say a question, you can understand, right. क्वेश्चनर में बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे there would be questions to qualify them. फॉर एग्जाम्पल कि उनका अभी बजट कितना है फॉर मार्केटिंग, उनका बिजनेस का वेबसाइट क्या है, हाउ मच रेवेन्यू आर दे मेकिंग पर मंथ, आर एनी पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड. So basically you will ask them questions to understand whether they are a qualified lead for a business or not, right. And after they fill out the questionnaire, then you will redirect them to a thank you page, जहाँ पे you will give them more information कि आपने कॉल बुक कर ली, थैंक यू, these are the next steps, ये रिसोर्सेज देख लो, be sure to attend the call, yada yada yada, right. That is what a VSL funnel looks like. This is what works very well in the high ticket space, and जितने भी बड़े coaches के आप ads देखोगे, they are using this, right. So you can replicate this works awesomely well. That's the second thing that you would be requiring. Third thing that you would be requiring is going to be sales, right. मार्केटिंग हो गया, हमें क्लैरिटी मिल गई क्या करना है, फनल बन गया हमारा. नेक्स्ट क्या चाहिए? सेल्स चाहिए. वाई? बिकॉज पीपल आर बुकिंग कॉल्स विद यू नाउ. अब उनको बेचना भी आना चाहिए. फॉर सेलिंग देम यू नीड लाइक अ प्रॉपर सेल्स फ्रेमवर्क. अगेन आप इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, यू नो आई एम वेरी लाइक फ्रेमवर्क के बारे में आई कीप ऑन टेलिंग यू टू हैव लाइक अ प्रॉपर सेल्स फ्रेमवर्क, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक वैलिडेटेड फ्रेमवर्क होगा वेर यू कैन सेल हाई टिकट to in a colder market. That is the only way that you can scale this entire thing, this entire business. Sales is like the most crucial aspect when you are running a VSL funnel. क्योंकि लीड्स तो आ जाएंगे क्वालिटी, पर बेचना नहीं आएगा तो लीड्स का क्या करोगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर व्हाट वी डू इन आवर सेल्स एजेंसी. तो वी हेल्प देम आउट टू आउटसोर्स देयर एंटायर सेल्स थिंग टू अस बेसिकली. तो पूरा सेल्स का वी टेक केयर ऑफ इट. बट थर्ड थिंग इज व्हाट यू वुड बी रिक्वायरिंग इज सेल्स.
And after sales, the fourth thing that you would be requiring is a fulfillment plan. I'll give you a simple idea. अगर आप एक beginner हो, this is what I would recommend you to do. Beginner हो तो you do not need to build like any courses. कुछ मत record करो पहले से. Do not do that. Time waste होगा आपका. What I want you to do is instead of that, ये सारी चीज़ें करो. इनिशियल के क्लाइंट्स पकड़ो एंड जो इनिशियल क्लाइंट्स आएंगे उनको 1-on-1 सेशंस दो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप एकदम से 100 क्लाइंट्स को केटर करने लग जाओगे, इतना ईजी है नहीं. तो गो फॉर फुलफिलमेंट 1-on-1. समझो कि क्लाइंट्स के क्या चैलेंजेस है. जब आपने लाइक लेट्स से 20-30 क्लाइंट्स को केटर कर दिया 1-on-1, अब होगा क्या कि यू वुड हैव इनफ डेटा एंड इनफ चीज़ें आपको पता होंगी कि क्लाइंट्स कहाँ पे फंसते हैं, उनके कॉमन क्वेश्चंस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है. एंड दैट इज़ व्हेन यू प्रोडक्टाइज योर इंटायर फुलफिलमेंट, या फिर दैट इज़ व्हेन यू रिकॉर्ड दैट कोर्स. क्योंकि वो कोर्स अब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि 30 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और उनको रिजल्ट आ चुका है. तो बेसिकली दिस विल 1-on-1 विल अलाउ यू टू बिल्ड लाइक अ प्रॉपर SOP फॉर फुलफिलमेंट, कि आपको पता होगा कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, क्वेश्चंस ये आते हैं, दिस इज हाउ टू सॉल्व, एंड देन यू प्रोडक्टाइज इट. So I would say that is what you require initially to build like a high ticket business in India. You need clarity first of all, service price, yada yada yada, funnel, sales and fulfillment. So a very high level overview. I would of course make videos जहाँ पे हम in depth जाएंगे into each one of them. I already have videos on the channel, so you can just watch that after this video. And if you found this helpful, subscribe का button है, you can click that. Every Sunday I post a new video related to business and sales. So yeah,